बराबर सही कर पाता। Good morning, students. Good morning, sir. So we are talking about testes. Okay, I just told you that if it's a pair, it's written as testes. If it's singular, it is written as testes. And the gonads are called what? Primary sex organs, PSO. They have a dual role. What are the dual roles it performs? It helps in the process of gametogenesis. That is the formation of gametes. In this case, it is spermatogenesis. As well as it helps in the secretion of hormones like androgens. Androgens is a class of hormones. मतलब androgen is a family of hormones. उसके अंदर बहुत सारे दूसरे hormones होते हैं और उसमें से जो सबसे powerful और सबसे famous है वो कौन है बच्चों? Testosterone. So what are the dual roles performed by the testes? One is gametogenesis, the other is the endocrine function of production of androgens like testosterone. Yeah, continue Anushka. Testis is composed of seminiferous tubules. I have told you this before that the testes it has many compartments and the compartments are called what bachcho? Lobules. And inside the lobules there are these sperm producing tubules which we are called as seminiferous tubules. Outside the seminiferous tubules, the tissue is called stromal tissue. And this stromal tissue has cells which are called as interstitial cells or the Leydig cells. And these interstitial cells or Leydig cells, they secrete the hormone that is testosterone. What's the hormone secrete करते हैं? Testosterone. Yes, continue. Androgens regulate the development, maturation, and functions of the male accessory sex organ. Okay. Male accessory sex organs. These are primary sex organs. Gonads, मतलब testes are which organs? Primary sex organs. उसके अलावा एक्सेसरी हेल्पिंग जैसे हम लोग जब फ्लावर पढ़ते हैं तब हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम गाइनोशियम आर द एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेपल्स पेटल्स आर द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे जो है जो मेन है वो कौन है? गोनाड्स। ओके, और एक्सेसरी में सेकेंडरी में कौन कौन आएगा? एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब स्कूल में पढ़ा था ना आप लोगों ने? All that will come. Okay, continue. The detailed structure we'll do in 12th standard. Yeah. These hormones stimulate muscular growth, growth of facial and Muscular growth. So who is more muscular? Males. So muscular growth. Yes. Then growth of facial and axillary hairs. growth of facial hairs. What is axillary hairs, Mucho? I told you last time. In the armpits. Yes. Then aggressiveness. Aggressive मतलब आक्रामक बिहेवियर, नॉट चिड़चिड़, आक्रामक प्रवृत्ति। ओके, लगे आक्रामक, या low pitch of voice. Okay, females have a high pitch ability. So high pitch. Then next. And एक और भूल गए वो लोग, highly intelligent. Androgynous. ये सारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कि वो बहुत बुद्धिजीवी होता है। Next. Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, formation of spermatozoa. Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behavior. Male sexual behavior, male sexual needs, desires, and his sexual stimulation is all called what? Libido. Male sexual behavior is called what? Libido. Sexual arousal वगैरह सब इसी में आता है। Libido कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Libido.
these hormones produce anabolic synthetic effects on proteins and carbohydrates. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना ये टेस्टोस्टेरोन, इसलिए आप लोग देखते हो ना काफी बॉडी बिल्डर्स इसको अब्यूज करते हैं। ये एनाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, read ovaries है तो just go through it. Females have a pair of ovaries located in Okay, so female gonads are ovaries. They have a pair of ovaries located in which cavity? Abdominal cavity. Right. Ovary is the primary female sex organ. जैसे मेल में कौन है, टेस्टिस है, फीमेल में कौन है, ovaries. So primary sex organ in females is ovaries. Which produces one ovum during each menstrual cycle. Correct. In addition, ovary also produces two groups of steroid hormones called estrogen and progesterone. Yes. Ovary is composed of ovarian. The female secondary sexual characters are mainly influenced by estrogen. Progesterone helps to maintain pregnancy. It helps to develop the alveoli of the mammary glands for milk production. ये सब काम करता है। Yeah. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues. The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. Correct. After ovulation, the ruptured follicle is converted to a structure called corpus luteum, ये भी बताया हुआ पार्ट है मैंने। which secretes mainly progesterone. Correct. Estrogens produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of growing ovarian follicles. You remember I told you primary follicle, secondary, tertiary, वो बताया था एक बार? हाँ, ऐसे। 12th में और आएगा डिटेल। Appearance of female secondary sex characters, that is high pitch of voice, etc. Mammary gland development. Estrogen also regulate female sexual behavior. That is female libido. Progesterone supports pregnancy. Progesterone also acts on the mammary glands and stimulates the formation of alveoli, sac-like structures which store milk and milk secretion. ये prolactin के टाइप पे और oxytocin के टाइप पे बताया। Now, आगे वाला जो पार्ट है छोटे-छोटे हार्मोन्स हैं वो, उसमें से एक है atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. क्या नाम है हार्मोन का? एक मिनट चुप बैठो तुम। हाँ बोल। सर लिबिडो का और एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ, लिबिडो का मतलब होता है एक मेल या फीमेल का सेक्सुअल डिजायर, इच्छाएं जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, तो बोलते हैं लिबिडो। ओके? बाबू छोड़ा तो बीच बार पीछे। हाँ। अंडर पेरेंटल गाइडेंस उसको सुनाना चाहिए। ओके? ANF क्या बोलता हूँ उसका? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये वर्ड किया होगा, पोटेजी। ये बताइए इसका मीनिंग। नाट्रियम क्या नहीं किया है? Natrium is Na+, that is sodium. Okay, and second, now see this word natriuresis. Uresis मतलब in urine, and natri means what do you know? Sodium. So what is the basic meaning of the word natriuresis? It is the loss of sodium in urine, या फिर presence of sodium in urine is called natriuresis. Okay, and the name of the hormone is atrial natriuretic factor. बोला कितने एट्रियम है? बता कितने एट्रियम है? Backward don't help you. कितना एट्रियम है? ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा।
बोल बोल बोर्ड में देख के बोल कितनी बार लिखा है एटीएम मैंने एक ही बार लिखा है। हाँ यही याद रख तू ओके देखो कंडीशंस okay so what if in the body the blood volume has increased normally how many liters of blood do we have 5 on an average now the volume has increased from 5 say for example it has become 5.5 or it has become 6 liters why because maybe the blood के अंदर sodium has increased, the blood water content has increased. तो जिसके से blood की मात्रा बढ़ेगी और वैसे उसका blood pressure भी क्या होगा बढ़ेगा. So the BP has become high because the blood volume is high. You understand my point, Chilo? Yes. So what is the problem right now the body is facing? Blood volume is high, blood pressure is high, and what is the reason behind that? That blood के अंदर sodium के levels और बढ़ गया. अभी जो हमारा हार्ट है आपको पता है ना उसके पास एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम है बच्चों तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे रिटर्न होता है राइट एट्रियम उसको वीनस रिटर्न बोलते हैं क्या बोलते उसको वीनस रिटर्न तो ये जो ब्लड वापस आ रहा है वो भी तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा जिसके से राइट एट्रियम की वॉल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे the right atrium का walls will stretch मतलब size में they will increase expand हो जाएंगे because of which this part which part the right atrium will release a hormone A and F क्या आएगा इसका full form atrial natriuretic factor A and F का क्या full form है atrial natriuretic factor. You remember the nephron which was renal tubule? Yes, sir. PCT, Henle's loop, Yes, sir. DCT, CT, yes or no? Yes, sir. So what is the hormone? ANF. The ANF will act on the renal tubule. When it will act? Renal tubule. And it will cause the migration of Na. Who is Na? Sodium. Where is it present? In the blood. From the blood, it will be put into where Machlo? Renal tubule. So can I say it is increasing the tubular what secretion of sodium. क्या इंक्रीज किया उसने ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं सिक्रीशन मतलब ब्लड में से उठा के सोडियम को किस में डाल दिया यूरिन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द अमाउंट ऑफ Na+ in your urine will increase. And don't you think along with sodium, a little bit of water will also go because of osmosis? Yes. And this together is called natriuresis. क्या होता है उसको? Natriuresis. जिसकी वजह से ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा. I have got my point. तो पहले प्रॉब्लम क्या था कि ब्लड वॉल्यूम हाई हो चुका था जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था लेकिन एएनएफ ने क्या कर दिया सोडियम को ब्लड से निकाल के यूरिन में डाल दिया साथ में थोड़ा सा पानी भी चला गया तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया कम हो गया ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया कम हो गया मतलब ये केस में वो रिस्टोर हो गया नॉर्मलाइज हो गया आया ना सर जब आपको एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे at that time we'll talk about one more called RAS renin angiotensin aldosterone system which is antagonistic to ANF antagonistic
Ballistic, मतलब opposite to AN. This will come in excretion. Got a point? Yes or no? Yes. Then we have one hormone mentioned over there called erythropoietin. देखो, Yes. you know kidney has got juxtaglomerular apparatus. Yes. It is having juxtaglomerular cells. Okay? And these juxtaglomerular cells, they secrete a hormone called एरिथ्रोपोइटिन. विनायक, ये नाम से गेस कर क्या काम होगा एरिथ्रोपोइटिन का? What is the function of एरिथ्रोपोइटिन? आरबीसीज बनाएगा. कहां पे एक्ट करके आरबीसीज बनाएगा? आरबीएम. आरबीएम इज व्हाट? रेड बोन मैरो. उसको स्टिमुलेट करके क्या करेगा? एरिथ्रोपोइसिस. That is the formation of red blood cells. तो सिद्धानी हमको बताएगी. सिद्धानी, अभी तक हम लोगों ने कितने हार्मोन्स देखे जो एरिथ्रोपोइसिस करते हैं मैडम? बोला तो बोल. क्यों से? देखा? डूब मरो, हर एक क्वेश्चन का आंसर टुकड़ा दे रहे हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर नहीं दिया उसने. हाँ, बैठ दीजिए. हाँ? क्या हो रहा है? तो मालूम था तेरे को? हाँ, फिर मालूम था तेरे को मालूम है. 3 है 3. बैठ दीजिए सिद्धानी. जय वन ऑफ यू ऑलमोस्ट टेल मी. अब जय को भी पछाड़ना है तेरे को. अभी जय आंसर नहीं है तो दूसरे को खड़ा रहेगा. एरिथ्रोपोइटिन. हाँ, फिर हाइड्रेशन. हाँ, cortisol and thyroxine. बैठ जा. 3 है ना 3. ये तीसरा वाला था. Okay. So what is the function of erythropoietin? Erythropoietin stimulates the RBM, that is the red bone marrow, for erythropoiesis. Understand? Now, next is the hormone secreted by the cells of GI. What is the GI? It is gastrointestinal tract. What is GI, guys? Gastrointestinal tract. That is GI. Okay, so we are talking about the cells of GI, gastrointestinal tract. Okay, see there are 4 hormones that they have mentioned. See the first one. Have they mentioned gastrin? Yes. Followed by secretin. Then there is cholecystokinin, and there is gastric inhibitory peptide. What are the name of the 4 hormones? Gastrin, secretin, cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide. Learn the 4 names first. Then once you आपको learn करो. हाँ, थर्ड वन का प्रोनाउंसिएशन. तू क्या छोले बोल रहा था ना? cholecystokinin.
Yes, Akash, tell me the four names. Gastric secretory, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide. Yes, last bench. Better. Gastric secretory, Cholecystokinin. बस कर दिया विचारों को प्रोनाउंस करने ही में आधी जान चली जाती है देखो. Now who is this? Gastric. It acts on gastric glands. Sidyani will tell us what is gastric gland. Where are gastric glands located, Sidyani? Where are the gastric glands located? What is gastric gland? Pute, you know what is gastric gland? Stomach में present होता है. Stomach में. Gastric का stomach ही है ना. बैठो. So gastric acts on what? Gastric glands, and then they secrete HCl and pepsinogen. तो HCl पेप्सिनोजन कौन सिक्रीट करता है? Under the stimulation of learn this part. कौन से दो secretions है gastric glands के? HCl and pepsinogen under the influence of gastric. Next is what, guys? Secretin. It is the first hormone to be discovered. It acts on the exocrine part of the pancreas, and it will stimulate the secretion of water and bicarbonate ions to produce pancreatic juice. Okay, वो कहाँ बैक करेगा? पैंक्रियास का कौन सा वाला पार्ट? एक्सोक्राइन वाला. तो क्या रिलीज करेंगे? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस. थर्ड वन इज व्हाट? cholecystokinin. It acts on the gall bladder and the pancreas, exocrine pancreas, and it causes the release of bile and the pancreatic juice. You know no gall bladder बच्चे लोग स्कूल में देखा लिवर क्या में छोटा सा ऑर्गन रहता है गॉल ब्लैडर जो बाइल को क्या करता है कंसंट्रेट करता है सीसी के उसके ऊपर एक्ट करके उसको स्क्वीज करके बाइल को रिलीज करता है. सीसी के मतलब cholecystokinin. गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके उसको क्या करेगा स्क्वीज करेगा और gastric inhibitory peptide will act on the gastric glands as well as your SI, that is your small intestine, and it will stop the production of HCl and it will reduce the motility of your small intestine. Yes, Sunita, क्या होगा इसका मतलब motility of the small intestine? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को क्या करेगा स्लो करेगा ताकि आपका फूड क्या हो एब्सॉर्ब हो. जब हमको लूज मोशन होता है ध्यान लूज मोशन मतलब क्या बताओ मेरे को. लूज मोशन मतलब वेट करा होता है. लूज मोशन के टाइम पे गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ती है जिसके से चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं होती तो फीसेस वाटरी हो जाती है पानी जैसे. समझा कि नहीं क्या बोल रहा है वो पानी क्या पानी हो गई. डिस्प्ले पर देखना पड़ेगा. हंसो तो यार अरे भारी. हाँ ब्रेक के बाद भी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और वो
So what's the next thing? Mechanism of हार्मोन कौन बोला? बोले हार्मोन बोला तो पैसिव बोलता था हार्मोन हार्मोन नेक्स्ट mechanism of hormone action में लोग क्या यूज करते हैं और ये दिखता है वो भी वही यूज करते हैं दिखा एक मिनट क्या है what is this for how do you erase it नीचे डिलीट बटन पर बटन करने का पूरा वहां सबको भी चाहिए इजी मतलब प्रैक्टिस के लिए हां what are the two examples that are given there but okay now what are we talking about mechanism of hormone action okay and they have given two examples there one is FSH and other is estrogen and FSH comes under the category of which hormone protein hormone and estrogen comes under the category of which hormone so we are going to discuss the mechanism of action of these two different type of hormones एक जिसका केमिकल नेचर प्रोटीन है और दूसरे का केमिकल नेचर क्या है स्टेरॉइड ये दो अलग अलग ग्रुप्स है यस so let us talk about protein hormone action with the example of FSH okay so inside the blood there is FSH which gland secretes FSH guys pituitary gland anterior pituitary now FSH or any other protein hormone is a very large hormone such hormones cannot enter the cell okay the cell membrane does not allow the entry of such large hormones can the hormone enter inside no so that is why you find that the receptors of the hormones are present on the cell membrane ये हार्मोन के जो रिसेप्टर्स है कहां पे प्रेजेंट है वो चलो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट और बाय पॉइंट अब ये जो हार्मोन है इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स and that will result in the formation of a hormone receptor complex क्या फॉर्म करेगा वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स hormone receptor complex understood this point क्या फॉर्म होगा hormone receptor complex okay then NCERT says that it causes a response 1 okay as you will go in your first year medicine this response 1 भी आपको डिटेल में बताया जाएगा वहां पे एक प्रोटीन फॉर्म होती है जी प्रोटीन जिसकी वजह से एक एंजाइम्स एक्टिवेट होती है जिसका नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज ये सबको शॉर्ट में एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया देयर इज रिस्पांस 1 हमको वही याद रखना लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये मालूम होना चाहिए कि रिस्पांस 1 मतलब इसमें कुछ अननोन चीज नहीं अंदर एक प्रोटीन है जी प्रोटीन वो एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से एडेनाइलेट साइक्लेट करके एक एंजाइम एक्टिवेट होगी जो एटीपी को ब्रेक करके साइक्लिक एएमपी फॉर्म करेगा ऐसे सब होता है आई होप यू गॉट माय पॉइंट तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको इट इज रिस्पांस 1 and because of this response 1 especially this adenylate cyclase it will convert ATP into cyclic AMP so there is formation of what we call cyclic adenosine monophosphate बोलो cyclic adenosine monophosphate just like your adenosine triphosphate it got broken down into AMP that is adenosine monophosphate okay अब बाकी का जो एक्शन है अंदर कौन करेगा ये मॉलिक्यूल्स करेंगे इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर प्राइमरी मैसेंजर कौन था हार्मोन
सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? साइक्लिक AMP. तो द थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बच्चों? सेकेंडरी मैसेंजर. And who is the example of secondary messenger? Cyclic AMP. In some cells it can be calcium, some of them it is calmodium. ऐसा अलग-अलग secondary messengers होते हैं. Okay? So primary messenger कौन है guys? हार्मोन खुद. वो अंदर जा पाएगा? नहीं. तो उसे किसका फॉर्मेशन करवाया? सेकेंडरी मैसेंजर का, जो अभी आगे चेंजेस लेके आएगा. The next change is which response? It's a biochemical response. मतलब अंदर कुछ chemical reactions हो जाए. जैसे कि there is a formation or activation of enzyme called PKs, pyruvate kinases, जो ATP का एनर्जी प्रोटीन को देके उनको फॉस्फोराइलेट करता है. तो प्रोटीन्स एनर्जाइज हो जाती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. वही शॉर्ट में आप क्या ध्यान रखोगे? कुछ अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. एंड बिकॉज ऑफ इट जो एक्चुअल इफेक्ट है वो आता है और उसको हम कहते हैं कौन सा रिस्पॉन्स? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये एक्चुअल इफेक्ट होता है. जैसे कि अगर हार्मोन FSH है, अगर हार्मोन कौन है? तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा कि ओवरीज का ग्रोथ होगा. सो इट विल बी व्हाट? ओवरियन ग्रोथ. ओके. सो ये 5 स्टेप्स वो लोग ने दिया है. पहला स्टेप क्या है? कि हार्मोन विल बाइंड टू द रिसेप्टर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. सेकंड है रिस्पांस 1, जिसकी वजह से है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. फिर आएगा बायोकेमिकल रिस्पांस और लास्ट में देयर विल बी व्हाट? इफ इट इज FSH, the physiological response is what? Growth of the ovaries. Clear everyone? Yes. The second type of hormone here, so is estrogen, right? It is a steroid lipid hormone. Oh, estrogen. Okay, you remember that the cell membrane is also phospholipid. This is also lipid, lipid, bhai. So now the hormone can enter inside the cell. एक difference आ गया. Protein hormone was not allowed to enter inside. This can enter inside. So the receptors will either be in the cytoplasm or in the nucleus. In the case of estrogen, see where they are shown? They showed in the nucleus. Okay? तो क्या फॉर्म हुआ? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. पहला स्टेप वही है. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स is formed inside the cell. वहां पे outside the cell. Now this HRC, hormone receptor complex, will get attached to the DNA. Gene बोलते हैं मालूम है उसको? हाँ. And it will form a gene. It's a PYQ. It's a gene hormone complex. तो second step में क्या form होगा इस? Gene hormone complex. Gene hormone complex. GHC. ठीक है ना? हाँ. Now this gene will result in the formation of mRNA, messenger RNA, and this messenger RNA will result in the formation of what? Proteins. So what's the next step? There is formation of messenger RNA by the process called transcription. Then there is formation of what kids? Proteins by the process of what? Translation. And then it will bring about its particular effect. Okay? So can we point out some differences between a protein hormone and a steroidal hormone kids? पहला वाला क्या होगा? Hormone does not enter the cell. तुमको फुल में लिखना है, ऐसे ड्रॉप आउट में. The hormone receptor complex is formed on the cell membrane. ये receptors कहाँ है? बाहर है. तीसरा, secondary messenger is required. The secondary messenger is not required. चौथा, gene
hormone complex, not required. उधर required. This occurs in a domino effect. प्रोटीन हार्मोन का जो एक्शन रहता है कैसा रहता है? डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं उसको. डोमिनो पता है? डोमिनो क्या होता है? डोमिनो एक के ऊपर एक गिरा दोगे सब गिर जाए. मतलब अगर यहाँ पे 4 हार्मोन यहाँ पे अगर बाइंड होते हैं तो अंदर 400 एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, फिर 4000 एएमपी फॉर्म होंगे, फिर 40,000 ये होगा, फिर 4 लाख जो होंगे वो बायोकेमिकल, मतलब एक की वजह से बढ़ते जा रहा है. तो ये बहुत फास्ट होता है एक्शन. दैट इज व्हाई प्रोटीन हार्मोन्स आर फास्ट एक्टिंग. और लास्ट वी कैन राइट अबाउट द एग्जांपल्स. क्लियर एवरीवन? Okay, so these are the 2 hormones. The last part of the chapter is about what, guys? The mechanism of hormone axis of protein hormones and steroid. One last time. Protein hormone, can it enter inside the cell, kids? No. No. So the receptors are there on the Cell membrane. So the first step is formation of the hormone receptor complex. It will cause what? Response 1. Then there will be formation of a second receptor like AMP or calcium. Then there will be a biochemical response followed by the physiological response. Udhar, can it pass the cell membrane? Yes. So the receptor से bind होके gene hormone complex बनेगा, translation translation से protein reaction. हाँ, copy करो अच्छे से इसको. Okay. Learn.